अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त करार दे दिया है। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। ईरान अच्छे तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अब नए हरमुज़ को पहले की तरह मुकम्मल तौर पर खोलना होगा। सदर ट्रंप अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुआहदा करेंगे। The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often. And usually once we talk through it, other countries putting pressure on Iran, once a deal is had, or not, depending on the choice they made, it will be a open strait, a toll-free strait that the entire world can use, which is the way that it should be. President Trump's decision, depending on what direction we want to go, we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. High-stakes negotiation. We've got the best negotiator in the world leading it. The president will make based on how this ends, but I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people. We are in control when it comes to that, including how the dynamics of the negotiation are coming together. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।